Hey guys, good morning. This is the third morning in Goa. This is the third morning in Goa. Yeah, right. I don't know, but let's see. So, अभी we're gonna take little rest and थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद लंच करने का मन नहीं है, पर थोड़ा बहुत ऐसे खाएंगे, फिर जाएंगे और देखेंगे गोवा में दूसरी और क्या क्या चीज़ें हैं. तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा सा रिलैक्सिंग ट्रिप पे आए हैं. समटाइम्स देखो मूड होता है, कभी आप ऐसी ट्रिप करिए जिसमें आपको एडवेंचर्स करने हैं, प्लान देम आउट और कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. वॉच लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड टॉक टू पीपल जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं ऑल ऑफ दैट. तो या फिर लोग जो लोग ज़्यादा जाते रहते हैं. काइंड ऑफ अ रिलैक्सिंग ट्रिप. आई डोंट वांट टू गो आउट मच, बट हाँ एक बार दिन में जाके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें देखी हुई हैं. बागा बीच, बैम्बलिन बीच, साउथ गोवा, डिफरेंट क्लब्स लाइक मैम्बो, कबाना एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब चीज़ें देखी हैं. तो इतना कुछ देखने का नहीं है. देयर आर अदर थिंग्स एज वेल दैट आर लाइक आई थिंक वेरी प्रोमिनेंट इन गोवा. जैसे कि आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हैं एक, और कुछ मार्केट्स जा सकते हैं, और स्पा के लिए डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, लोकल कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं. तो ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे तो डिफरेंटली हो सकता है काम. लाइक टुमारो वील चेक आउट फ्रॉम हियर फ्रॉम Marriott and we will check in to this Grand Hyatt Hotel of Goa, and then वहाँ पे चल के फिर देखेंगे कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं. So finally it is the time that we go for some lunch, and then we'll come back and then we'll take some rest, and then we will get ready for the evening. So now I'm back from the beach. Beach से वापस आ गए हैं. अब फेस वॉश करते हैं. So I am using this Forest Essential का face wash. Hydration is something that I run after because this is something that my skin lacks. So my face is now clean. Can you see? Yeah. What is this weird job? Okay, I have now cleaned my face completely. Now let's go for some moisturizer. Forest Essential का भी यूज़ कर सकते हैं, and but मुझे थोड़ा जेल वाला चाहिए because my skin is kind of, ये थोड़ा बहुत ऑयली लग रही है यहाँ पे आने के बाद, तो इसीलिए ये जो जेल होता है, जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर होते हैं, वो आई थिंक आर बेस्ट फॉर oily skin type. I'm going to use a little bit of
vitamin C. It has vitamin C and hyaluronic acid, yeah, and vitamin A also. So I'm gonna put this very little on my face. You just do not rub it, just very gently give it a little stroke. I think my skin is now, it feels oxygenated. It feels that, you know, it has taken up the right amount of oxygen and it can actually breathe. The pores can actually breathe now. So this feels amazing. You know, when your skin is happier, it's like you are happier inside of yourself. So I think I'm not gonna use like a lot of superlatives over here, but yeah, this is perhaps the best you know, amount of happiness that I'm having, like on the basis of my like skin requirement. Now let's move on to the next step, that is applying the sunblock or sunscreen, whatever. So I am here in Goa and I'm going out, so you need an SPF which is of around 50. So I'm gonna use this Body Shop's Skin Defense. Yeah, can you see? Okay, so this is Body Shop's Skin Defense Multi Protection Light Essence, and because it is non-greasy, so I'm gonna use it. If you have a dry skin, I will recommend you the other one. There are two types of sunscreen that they have, so you can have that. Okay, this feels, but I'm not wearing anything. Like 2-3 years that I've been using this Body Shop Skin Defense. I have Ruchi more, but this one is my favorite. It has a light essence and then, you know, it feels amazing. It is completely non-greasy as I have oily skin, and I think I'm taking all the prevention as much as I can, and would not want my skin to feel like, you know, very greasy or kind of, you know, very sticky. So I don't want all that to happen. So I have chosen a formula which is very skin friendly and light essence. So if you have oily skin, this is something that you should go for. We have other options also, but this is what I'm suggesting in this video as of right now. Maybe I'll come up with other, you know, other examples or whatever what I like generally in some other videos. So but right now this is the choice. So if you want to spend a little bit of, you know, money, I think it's worth it. Next destination and celebration. Next destination and celebration. This is so soothing. Amazing. So I'm gonna go now for now, and I'll catch you up later when I start getting ready after 15 minutes of rest. See you after 15 minutes. Ta-da.
out from here, from Marriott Resort and Spa, and we are going to go to Grand Hyatt for 4 days. अभी समुद्र के पास बैठे हुए हैं again at the same place. क्या सही लग रहा है. And I'll show you सामने. Isn't it pretty? Okay, I'll show you my room. This one, the biggest. चेंज करेंगे और रेस्ट करेंगे और सुबह कुछ फोटोग्राफी करनी है और थोड़ा सा पैकिंग कर लेते हैं ताकि आराम से ग्रांड हयात जा सकें और वहाँ का एक्सपीरियंस पे इंजॉय कर सकें. तो आप लोग भी चाहिए खाना खाइए, इंजॉय करिए और मिलते हैं कल के ब्लॉग में. बाय. So do not forget to watch my next vlog जो कि हम शूट करेंगे one of the most luxurious properties of Goa, Grand Hyatt में. और तब तक अपना ध्यान रखना ना भूलें क्योंकि ये आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता.